Last week we read chapter 9 and 10 of Umasamhita of the volume 3 of the Shivpuran. In chapter 9, Sanat Kumara gave detailed description of how the sinning souls are roasted and dried up by diverse tortures till their sins are exhausted completely. The servants of Yama tie the sinners and beat them severely. The sinners are subjected to excruciating torture, like beaten up by hot iron rods, fried in hot oil, smeared with molten metals and glowing acids, cast into a well full of filth and worms, eaten by terrible animals, you name it. The tortures inflicted on the body are so severe that the sinners cry unbearably. Sinners are made to go from one hell to another and are inflicted with the diverse tortures that are extremely painful to every part of their body by Yama's emissaries. In chapter 10, Sanat Kumara narrated about the various kinds of sins and the kind of sufferings that are inflicted on the sinners for the sins they committed. For example, the sinners who defile the temple of Shiva are scorched in the hellish fire till the final day of dissolution. Another example is the sinners who indulge in illicit union with others' partners are made to embrace red hot images of their partners and are struck in various ways. Like these, many other sufferings for different kinds of sins are explained in this chapter. Today we'll read chapter 11 of Umasamhita, the glory of the gift of food. Our English reader is Vijayata Auntie and Hindi reader is Rachna Auntie. बहुत बहुत शुक्राना. Jai Guruji Sangatji. Umasamhita, chapter 11, the glory of the gift of food. Vyasa said, "Those who commit sins go along the path to the Yama with great misery. O Holy Lord, now narrate the righteous deed which render pleasure in the path of Yama." Sanat Kumara said, "Auspicious or inauspicious, one has of necessity to reap the fruits of the actions committed by him without thinking. I shall now mention those sacred rites that yield happiness. Men who perform auspicious rites here, whose minds are gentle and who are mercifully pass through the terrible path of Yama happily. He who makes gifts of sandals of leather or wood to leading Brahmins goes happily to the abode of Yama on a great horse. By making gifts of umbrella, they go holding an umbrella. By making gifts of palanquin, he goes by the means of a chariot. By making gifts of beds and seats, he goes with ample rest. Those who make shady parks or those who plant trees on the wayside go without weariness even in the hottest region. Men making flower gardens go by the aerial chariot Pushpak. Makers of temple feel at home on the way. The founders of hermitage, of aesthetics, and rest houses for orphans feel as if they play in the house. Worshippers of God, fire god, Brahmins and their parents go along that path as they please. They are honored on the way. Those who gift lamps grow brightly illuminating all the 10 quarters. By giving dwellings an asylum, they go without ailments on the way. Those who habitually serve their preceptors go without difficulty. They get ample rest on the way. Those who gift musical instruments to Brahmins go happily feeling at home on the way. Givers of cow go along the path flourishing with all their desires. They get those foodstuff and drinks which they give away here on the path also. By giving water for washing the feet, one goes along the path full of water. He who gifts oil for massaging the feet
goes on horseback along that way. O Vyasa, Yama never comes near the man who always makes gifts of water of washing the feet, oil for massaging, lamps, foodstuffs, and dwellings. By making gifts of gold and gems, he crosses all impassable hurdles. By gifting silver and oxen, he goes to Yamaloka happily. By these and similar charitable gifts, people go happily to Yama's abode. They attain different pleasures in heaven. Of all charitable gifts, the gift of food is the greatest. It is pleasing. It gives pleasure immediately. It enhances strength and intellect. O excellent sage, there is no other charitable gift on par with the gift of food. All living beings originate from food. In its absence, they die. Food gives blood, flesh, fat, and semen, and out of semen living beings are born. Hence, the universe is identical with food. Hungry men are not delighted even if they possess these things with the gold, gems, horses, elephant, women, garlands, sandal paste, and the like. All persons, the child in the womb, the newborn baby, the child, the middle-aged man, the old man, the gods, the Danavas or Rakshasas, desire food. Hunger is the acutest of all ailments. There is no doubt that it perishes on the application of medicinal ointment with the food. There is no misery equal to hunger, no sickness equal to hunger, no happiness on the par with being free from sickness, and no enemy equal to anger. All embodied beings die when scorched by the fire of hunger. That is why it is glorified that there is merit in the charitable gift of food. The giver of food is a giver of life. The giver of life is a giver of all. Hence, one attains the benefit of gifting everything by means of charitable gifts of food. If a man performs holy and sacred rites after being nourished with food gifted by someone, the merit of the sacred rite is shared half and half by the two, namely, by the giver of the food and the performer of the rites. There is no doubt in this. The giver of the charitable gift of food obtains here and hereafter whatever means of pleasure there are in these worlds, such as gems, women, and vehicles. The body is the greatest of the means of achievement of virtue, wealth, love, and salvation. Hence, one should preserve one's body with food and drink. They praise only food. Everything is founded on food. There has never been a charitable gift like that of food, nor will there ever be. O sage, the entire universe is sustained by food. It is food that infuses virality in the people. The vital airs are founded on food. Even by putting one's family to inconvenience and trouble, one should give food to the mendicant Brahman of noble soul, if one wishes for one's prosperity. He who gives food to a suppliant Brahmin in distress actually makes an excellent deposit, facilitating his benefit in the other world. The householder, desirous of prosperity, shall worship a Brahmin who has approached him at a proper time for his livelihood, or who is travel-weary and come to his house as guest. O Vyasa, a giver of food, of good conduct, and free from malice, is honored. A gift of food never goes in vain, be it to a dog or a person who cooks dogs. If a person eschews anger,
that surges up, he derives happiness here and hereafter. He should not encourage it even if it is natural. One shall try to eschew it somehow. He who gives food to weary, unknown traveler without feeling distress for the same will derive prosperity. The meritorious benefit of the man, O great sage, who delight Pitras, gods, Brahmins, and guests with foodstuff is really immense. The gift of food and drink, whether to a Sudra or to a Brahmin, is equally excellent. One should not ask the spiritual lineage, branch of the Vedas, or the country of the recipient. He who gives food when begged by a Brahmin goes to the highest heaven and remains there till the final dissolution, when all the living beings are destroyed. The garden of a food giver acquires the fruits of his cherished desire, as a Brahmin do in the highest heaven. O sage, O great sage, listen to the divine regions which are created in the heaven by the gifts of food for the giver of the food. The abodes of those noble souls in heaven shine in various shapes and are equipped with desirable objects. The tree bear the fruits of all desire, the golden lakes in the mansions, the auspicious wells and tanks are all excellent. The auspicious drinks of various varieties are proclaimed. There are huge mountains of foodstuffs, garments, and ornaments. Milk flows in the river there. There are huge mountains of ghee. The palaces are white in color. Beds are brilliant like gold. The giver of food goes into these regions. One should be the giver of food if one wishes for one's own good in this world or the other world. These regions of the meritorious giver of foods are very brilliant. Hence food shall be given as gift by the people. Food is Brahma himself. Food is Vishnu himself. Food is Shiva. There has never been, nor will there ever be, a gift on par with that of food. Even after committing a great sin, if a man gives food to the needy, he becomes rid of all sins. He goes to heaven. The 8 gifts are honored most in the land of dead, viz. Food, drink, horse, cow, garments, bed, umbrella, and scat. If a man wishes to go to the city of Yama in the aerial chariot, he shall necessarily make these special gifts. These sacred narrative give instances of the virtue of gifts of foodstuff. Whoever reads this or teaches this to others flourishes indeed. O great sage, if a person listens to this or narrates this at a performance of Shraddha to Brahmins, it results in never-ending gift of food to Pitras. Jai Guruji Sangatji. That concludes the English reading for today. Rachna Aunty is going to continue the Hindi readings. Jai Guruji, Shukrana Guruji for this Shivpuran सेवा. यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाला विविध दानों का वर्णन. व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं. अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं. सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है. अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं. इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कोमल चित्त
और दयालु पुरुष है वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक के दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य, अभंगे, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और ना किसी तरह उसे फेंकें ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होगा। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्ध का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष रूप से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा ब्राह्मण
अथवा श्राद्ध में ब्राह्मण को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 समाप्त। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।